बड़े सपने पूरे करने के लिए ना बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। उसके लिए ना सेम बर्थडेज की जरूरत नहीं होती मैडम। ट्रू दैट। कभी कभी तुम भी थोड़ी पते की बातें कर लेती हो, मेरे संगति का असर है शायद। लेकिन अगर मैं बताऊं ना, रतन टाटा जी का एक कोट है जो एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर हम सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और पैशन के साथ, जज्बे के साथ उसे पूरा करना चाहते हैं, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। सक्सेस इज इनएविटेबल। बिल्कुल, और अपने काम के लिए यही पैशन बनाता है हमारे आज के मेहमान को बेहद खास, जिनकी किस्मत ने उन्हें भारत से अमेरिका पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, उनकी जो मूवी और एक्टिंग, फिल्म मेकिंग के लिए जो उनका पैशन था, उसने उन्हें बना दिया एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर। जी हाँ, हम आपको आज हमारे मेहमान से मिलवाने वाले हैं, जो कि ना केवल फिल्म मेकर बल्कि एक्टर, प्रोड्यूसर, आयुर्वेदा रेस्टोरेटर और हैप्पी लाइफ योगा स्पीकर भी हैं, त्रिलोक मलिक जी से। त्रिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन द शो। थैंक यू। सबसे आपसे तो बात करने के लिए खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी इस यात्रा की। लोनली इन अमेरिका आपकी पहली मूवी थी। कैसे आप इंस्पायर हुए कि इस सब्जेक्ट पर एक मूवी बनाना है, और उसके बाद तो खैर आपकी यात्रा, जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री, वैसी रही। तो कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? मैं जब फिल्म मेकर बना तो मैंने एक प्रॉमिस किया अपने आप को, मैं कभी इंडिया को बैड लाइट में नहीं दिखाऊंगा। चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, आई विल ऑलवेज शो द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, इसका कल्चर, हिस्ट्री। और जब मैंने लोनली इन अमेरिका बनाई तो उस वक्त अमेरिकन स्पेस में इंडियन के लिए कोई फिल्में नहीं बनती थी। लोनली इन अमेरिका पहली फिल्म थी जो 74 कंट्रीज, 37 फिल्म फेस्टिवल्स एंड वॉन मैनी अवार्ड्स, HBO एक्सेट्रा। स्पाइक ली गेव ए गेस्ट अपीयरेंस। क्योंकि एज ए इमिग्रेंट जब आप जाते हो तो emotionally you are always trying to find an anchor. We could call it home. कि हाँ भाई, मैं lonely महसूस नहीं करूँगा, it's home. तो conflict जो होता है कि आप अमेरिकन ड्रीम तो एक्सेप्ट कर लेते हो लेकिन कल्चर नहीं कर पाते। हाँ। तो वो फिर एक लोनलीनेस क्रिएट होती है when you're not part of the whole culture and the whole system. So I made a romantic comedy that how the first generation says, accept the American dream, but when it comes to marriage, Indian की शादी करनी। But that conflict is आज also भी होता है ये। आज भी होता है जी। लेकिन आज थोड़ा कम है। The word has become global. जी। So I made a romantic comedy on that. हाँ। It was a very funny movie. And the journey began from there. And as I said, I wanted to make films about the Indian diaspora. And all my film, the whole graph, Lonely in America, Love, Lust, Marriage with Deepti Naval, that was about how the marriage of a workaholic doctor gets affected by workaholism and the American dream. Then I made a film, Khushiyan. That is about how we are living in other countries and our parents are back in India. Right. One day news come, your mother die, your father die. As a child, as a son or a daughter, we question what price I'm paying. So what I suggested was make room for the heart of the relationship. Right. Make time, keep coming. Call your parents every day. Say, I love you, I love you. Because a lot of time we don't tell people Absolutely. that I love you. I'm glad you're in my life. So it's very important. So Khushiyan was with Tiska Chopra from Tare Zameen Par, जी. Jasbir Jassi, Kulbhushan Kharbanda. जी, जी. Jagjit Singh ji gave the music. Oh. And I just came to know recently when Jagjit Singh ji was in his last stage, he had that song from Khushiyan.
put it in a loop, and he hurt for the last 10 days. टॉकिंग अबाउट खुशियाँ, हमने ये भी सुना है कि राजेश खन्ना जी को भी आपने ये रोल ऑफर किया था। गजब की बात ये है कि कल राजेश खन्ना जी का जन्मदिन भी है। हाँ, राजेश खन्ना जी को मैंने साइन किया बिकॉज मैंने सोचा आनंद पिक्चर थी विथ कैंसर, खुशियाँ आल्सो, ही लव द स्क्रिप्ट एंड बट देन ही गॉट सिक। तो मेरे को कुछ महीने बाद बोले, कहते यार त्रिलोक तो फिल्म बना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी, कमाल की शख्सियत है, और अगर काम किया होता तो एक अलग बात होती है ना। उनका आशीर्वाद था प्रोजेक्ट जी के ऊपर, जी जी। आई वुड से। अच्छा, एक आपकी टीवी सीरीज रही जी, नमस्ते, आई लव मेकिंग फिल्म्स इन न्यूयॉर्क, व्हाट अबाउट दैट? आई गेस यही वो टीवी सीरीज है जिससे आप एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर बने। जी हाँ, बिकॉज मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ एंड न्यूयॉर्क इज ए मीडिया कैपिटल, is the greatest city in the world, so called. Right. And I love making films. Not only me, if you look at Karan Johar, most of his films about the diaspora has been made in New York. So yes, I love New York and I love making films in New York. New York. But my next stop is India. I want to make films in India now. being in New York, you've still always been in India, isn't it? आपकी सभी फिल्मों को देख के हम कहते हैं कि कभी आप इंडिया से दूर थे ही नहीं। जी, और आपने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग भी की, तो सबसे पहले दर्शकों को दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियां, फिर बात करेंगे आपके एक्टिंग के सफर के बारे में भी। Okay. Have you found a replacement yet? Not yet, but I have a few interviews set up for tomorrow. Newsstand, how much all this costs? Well, a fool and his money are easily lost. Uncle, I just want to run computers. It's the same bloody thing. No, I have to try a new profession. Why else did I come here? You come here to make money. You fellows from Narayanpur are rotten. Mr. And Singh, how please about can- you? Sure. Your uncle and your father went drunk in Bunya's wedding and got kicked out. They had to go drunk. It was the only way to stand to look at your ugly cousin, Oh, the yeah? bride. Tablecloth. I saw a girl that's bisexual. Every time it's a sex, she said bye, bye. Hey, come on, put a boost. You got a million of them. Or I'm gonna hurt you. Well, I am laughing. I don't hear you. I am laughing inside. Laugh, laugh. वंडरफुल, सीरियसली फैबुलस इट वाज। तो दीप्ति नवल जी के साथ आपने इस मूवी में काम भी किया, मतलब आप एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर और एज एन एक्टर, इन तीनों भूमिकाओं में से सबसे पसंदीदा आपकी भूमिका कौन सी है? Actor. एक्टर, वाओ। अभी देखिए ना, आज मैं आपके शो पर आया हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, क्रू आ रहा है नहीं आ रहा है। I come here as a prince and I'm here and having fun. Wonderful. No, but I like all. Beside the joking, I like all. As a producer, I'm a very good producer. I organize well. As a director, you want to tell the stories. I want to tell the stories which will touch people's heart. It can make a change because film media is a very powerful media. True. And it can influence. It can be thought-provoking. You know, like they say, if you change your glasses, your vision changes. Right. The same way, the films can influence your thought process. Absolutely. I enjoy all roles, but if I have to choose one, acting is the easiest. Acting is the easiest. Okay. Because no management hassles and etc. Yeah, somebody else is doing it for you. Like here, the whole your wonderful Yes, crew it's here. the entire The crew wonderful which is crew working. here. Yeah. It's just the three of us facing the camera, but yeah, it's the Yes. entire crew working Entire behind crew, it. yes. Yeah. Okay, I was reading somewhere that 1st November 2014 ये त्रिलोक मलिक एप्रिसिएशन डे डिक्लेयर किया गया। What is the story behind this? I mean, it's a big thing. हाँ, I exactly. wish कभी मेरे नाम से भी कोई ऐसा appreciation day होता। Well, that happened because I live in Manhattan. All my work has been in Manhattan, and Manhattan is like the key place of New York City. So Manhattan board president, she's seen my work. She also attended my premiere of On Golden Years. And she decided to, I don't know, it's just the blessings of people.
Yeah, it's the blessings of all the people, I'm sure, who love you all around the world and all the people back here in India कि ऐसा हुआ. लेकिन आपको कैसा लगा? मतलब it's a big achievement. Exactly. It's good for my ego. I like that. It's an honest answer. I want to but be it was also humble. about- I want to be humble. लेकिन क्या है ना, ये अच्छा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. Appreciation कोई भी हो, हाँ. चाहे किसी भी रिश्ते में हो, अच्छा लगता है. अच्छा लगता है और But I'm आप जो humble. काम कर रहे हैं उस काम को लगातार करते रहने की प्रेरणा देता है. I think that is the best thing. So ego in that sense is a good thing. You know, when I was in Times Square, I felt I belonged to New York. So before settling down in New York, I traveled the entire country for 1.5 years, camping van. So when I was in New York, I felt I belong here. Many years later, this Appreciation Day came. So it's in the history of New York forever. एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एज अ यूएस लाइन प्रोड्यूसर, आपने बहुत सारी फिल्में, चाहे हम रजनीकांत जी के शिवाजी की बात करें या फिर कमल हसन जी की बात करें, मामूटी जी की बात करें, कंगना रनौत, आई मीन लिस्ट बहुत लंबी है. उनकी बहुत सारी फिल्मों में आपने एज अ लाइन प्रोड्यूसर उन्हें हेल्प किया है, उसे पुश किया है. तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? हाउ डू यू, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ इट? ओके, लेट्स पुट इट दैट वे. See, it all began, NFDC's MD that time, Mr. Ravi Gupta. Okay. You know, my film Lonely in America was shown on Doordarshan many Several times. times, yes. Many times. It was released here. So Shri Ravi Gupta ji, he was the MD that time. Now he's at the Whistling Wood studio. Called me up. Said, Tirlok, we want you to be US producer. I said, but I produce my own movies. He said, no, it's the same thing. So that began from Dr. Ambedkar. And after that, Rajnikant, Shivaji the Boss, so many films came. I'm a good producer. I'm a very, very good producer. I believe in providing the best production value with the least possible budget. So journey began, and Do you face any challenges, particularly because being a line producer in the US for Indian films? no, No. Okay. because I know my work. I'm good at it. I just love all the answers that you're giving. I am Cha- just no, in see, awe of that. the challenges will be always there. Absolutely. I have one advice to share. When you are trying to manage the crisis, don't get angry. Because making a film is like building a wall. If you pull one brick, the wall will fall. Absolutely. Wonderful. So I believe as a filmmaker and a producer, get the shot in the can. Get the shot in the camera. Yes. And I guess I've been lucky and I've been good. We have some visuals that we would like to share with our viewers at this point of time. So let's enjoy them together. ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ. ਜੈ ਹਿੰਦ. ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਫੜ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਊ ਜੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ. I see it. This could be your last Valentine's Day ever. But you should have not put it like that. Please apologize. I would have loved to be in my NRI home, but where are we? In Florida, drinking Californian wine. Like you always say, it's an Indian thing. Wonderful. अच्छा, आप एक आयुर्वेदा रेस्टोरेटर हैं, साथ ही आप हैप्पी लाइफ योगा स्पीकर हैं. तो आयुर्वेद और योग के प्रति आपका रुझान कब शुरू हुआ? ये कैफे एग्जैक्टली आपने कब स्टार्ट किया? Before I come to that, I want to share. You just showed on Golden Years. Yes. Falu Shah, who was singing there, that was her first screen singing. Okay. After that, she won Grammy. And then last year, she and our Prime Minister Modi They did made a song together on millets. Millets. Yes. And she was also the inauguration speaker at the Modi ji Yes. stadium. Yes. And I just wanted to mention that.
Thank you for you bringing so that up. So Ayurveda Restorata. So how did that happen? कैसा आपका रुझान हुआ आयुर्वेद की तरफ, योग की तरफ? हमेशा से था या कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने ये फ्यूल किया? नहीं, ये भारत की संस्कृति है. Ayurveda is the best way to heal your body. Allopathy is good for quick, but if you want to stay healthy, Ayurveda is the key. I always say, eat right, think right, and move a little bit right. That's the simplest form, and we often forget that. So I wanted to bring it that time, Ayurveda to the Americans. I had the Ayurveda cafe for 5 years. And people said, yeah, Ayurveda for Americans. I said, they will learn. And they learned. It was a tribute to all the mothers. No menu, sattvic food. अच्छा, no menu. I was just about to ask. No menu. जब माँ के घर में जाते हो कोई मेन्यू थोड़ा ना होता नहीं. जो माँ ने बनाया है वो हंसी खुशी खाते हैं. और वो ज्यादा खिलाएगी और खा ले. So same system we have there. Tribute to all the mothers. And then it was aromatherapy where you walk in, aromatherapy, sound therapy, color therapy. So I enjoyed promoting Ayurveda to the Americans. आपने कई मंचों पर योग के विषय में और किस तरह से योग के द्वारा हम अपने मन को और अपने तन की सेहत को अच्छा रख सकते हैं उस पर बात भी की है. तो कैसे रहते हैं ये सेशंस जब आप खासकर इस परिप्रेक्ष्य में कि आप भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर इस तरह के सेशंस कंडक्ट करते हैं? मैं हैप्पी लाइफ योगा कंडक्ट करता हूँ. जी. And I begin with that. I want you to do with me. Okay. I love myself. I love myself. I love myself. I love myself. Audience, say it also yourself. I love myself. I love myself. It is my responsibility. It is my responsibility to take care of my health. To take care of my health and well-being. And well-being. And I love myself. And I love myself. Wonderful. Because if you love yourself, you do take care. Exactly, that's true. People you love, you want to take care of them. But often हम भूल जाते हैं कि यार मैं अपने आप को भी प्यार करता हूँ. ये मेरी जिम्मेदारी है. Why neglect? It's very important to remember that. और सही बात है, शायद हम दूसरों को भी प्यार तभी कर पाएंगे जब हम पहले खुद से प्यार करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वरना वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप करते जाएंगे. पहले खुद से प्यार करना जरूरी है. जैसे एयरलाइन में कहते हैं कि पहले अपना मास्क लगाइए, उसके बाद अपने साथ जाने वालों का मास्क लगाइए, है ना? Yes, you are right. But in this case, I want every individual to be responsible for their own well-being. Absolutely. Thank you. It's your body, it's your mind which will go with you. Wonderful, wonderful. That is the best companion you can ever have. If your audience can understand that, I think it's great. Absolutely. So I love myself. I love myself. And we're going to laugh. So that's what we do on the show. We keep laughing and spread the smiles. So what a wonderful way to end this conversation. Exactly. With thank you so much for being here. I want to talk about also my new movie. Yeah. My new film is दिखाना है कुछ अभी? नहीं, आप. My new film is called I Am Hanuman. Okay. So far I have made films for the Indians in America. Now I want to make for the children of NRIs and children in general. And my next film will be in India, shot in Ayodhya and other places. And it's called I Am Hanuman. Wonderful. Because Hanumanji's values are very, very important for children to know. And parents don't know कि कैसे बच्चों को वो सिखाई जाए जो हनुमान जी की values हैं. So that's my next film, I Am Hanuman. Thank you so much for bringing this film to the audience. और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमारी सुबह को इतना खुशनुमा बना दिया. सच में हंसते हंसते हमने ये बातचीत को यहाँ पूरा किया है. Thank you so much. Thank you for having me.